Hi guys, welcome back to the Nifty City channel. नमस्ते. काफी देर हो चुकी है, लेट नाइट, क्या करें. But since we had a vote and since tomorrow is going to be a very important expiry, so मुझे लगा कि आप सबके साथ एक brief छोटा सा एक वीडियो शेयर करेंगे. So quickly let's jump in. तो क्या करने वाले हैं आज? We're going to be discussing Nifty, Bank Nifty, थोड़ा सा SGX निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली विल बी सीइंग कि यूएस मार्केट्स में क्या हो रहा है. सो डाउ का भी चार्ट एक बार कॉन्टेक्चुअली देखेंगे. तो लेट्स बिगिन विथ यूएस मार्केट में क्या हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज अपना डाउ जोन्स का चार्ट. नाउ डाउ जोन्स में बेसिकली क्या हो रहा था. इट वाज अ डाउन मूव, देन देयर वाज अ रिट्रेसमेंट, इधर एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया एंड देन कंटिन्यूएशन ऑफ डाउन मूव दिया. देन देयर वाज टॉक कि शायद से ये एक बॉटम 1 2 3 पैटर्न के साथ एक बॉटम लग चुका है. नाउ वी डोंट नो कि ये बॉटम होगा कि नहीं होगा. सो व्हाट वन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन वी हैव इज, अगर मैं ये रिसेंट स्विंग का टॉप से लेके बॉटम तक मार्क करूं, तो इफ यू सी it has taken resistance right at the golden ratio of 61.8%. ठीक है, ये लेवल आपको दिख रहा है 61.8% पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस डाउन ने लिया हुआ है. मैं इसको बॉटम कब कंसिडर करूंगा, जब डाउ मुझे ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देगा मुझे. देन आई विल सेफली से दैट दिस इज अ शॉर्ट टर्म बॉटम कंफर्मेशन. ठीक है, तब तक आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये कंटिन्यूएशन में अगर ये लो भी टूट सकता है. ओके, तो जब भी बॉटम लगना होगा, yes, this is a credible 1 2 3 pattern. This could be a bottom. We cannot predict the market. We can only certain levels को देख के हम बोल सकते हैं कि if ये हुआ तो क्या हो सकता है, राइट. मैं कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि क्या होने वाला है. वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, तो वी विल ओनली बी एबल टू टेल यू गाइस व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज. 2 3 सिनारियो क्या हो सकता है. सो इफ वी क्रॉस द 50 EMA, then we can confidently say कि ये bottom लगा है. If the market continues to fall, either it can make a double bottom and go back, or it can make a new swing low, that is the first extension, this level, and then again give some kind of retracement. Okay, so this is about the US markets. US markets, if we see on the smaller time frame what is happening today in the market, as we speak right now it is 11:46 PM the time I'm recording. तो ये एक important swing है. It is right at that important swing point, trying to give a breakout also of the 200 EMA, which is a positive sign. Now quickly coming to our markets, right. तो our markets में this is our Nifty का daily chart. Now like I discussed with you guys, 15,700 is a very good support. 15,900 is a very big resistance. Okay, so अब हुआ क्या है contextually हम देखें तो this red line is the 21 EMA. Now you guys know कि I use 21 EMA for a trend decider के तरह. 21 EMA is very important. Market opened above the 21 EMA, could not sustain, moved down. Next day again took resistance at the 21 EMA. I'm talking about the daily time frame. Came down again. We are not able to cross the 21 EMA. So now for tomorrow, if I have to speak for tomorrow, 21 EMA is somewhere around 15,871. तो मोटा मोटा हम बोल सकते हैं कि 15,700 से 15,900 इज अ रेंज. ओके, अब 2 या 3 दिन से मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, 2 या 3 दिन से हम ये रेंज में अटके हुए. मंथली एक्सपायरी है,
there should be a very good breakout of this range and there should be a trending move, right? But this trending move will not be a directional trending move. Markets may move up, then fall, or markets may open gap down, fall a little bit more, and then give a surprise up move. Something of that sort. I am not expecting a single side की gap up खुला और gap up होते ही गया, या gap down खुला और crash होते ही गया. I'm expecting a little bit of zigzag movement कि एक fake breakout या fake breakdown देगा ये levels का. That's why in the morning also I said consider 15,650 and 15,950. Yeah, 950. Why am I saying this? ताकि आप फेक आउट से बच पाए. फेक आउट क्या होता है कि अगर 15,900 का हमारे पास एक लेवल है, 15,900 के ऊपर जाएगी मार्केट और फिर गिर जाएगी. सो यू विल थिंक इट्स अ ब्रेकआउट, बट देन यू विल गेट ट्रैप्ड. ये अवॉइड करना है हमको. सो नाउ इफ वी मूव ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, ओके, नाउ दिस इज द फ्यूचर्स का चार्ट फॉर निफ्टी. नाउ यू कैन सी ये हमारा एक दिन रेंज में चला गया, उसके बाद हमारा एक दिन रेंज में चला गया, then we opened gap up and we went up. Again it was kind of a range, again we opened gap down and moved up, again we were in kind of a range. So trending move is pending. If we see bank nifty, it will be the same scenario. So what are the important levels, okay, as per our bank nifty futures charts? So the levels are unchanged, what I had given today morning also to the premium members. Flip will be 15,829 to 846. Okay, this is the flip. इसके ऊपर हम positive रहेंगे. An important swing point is 15,779. Important support, first support is going to be 683 to 714. Okay, this is the area of support. यही support से आज हमने bounce किया है, right? Second support is 15,593 to 616. Now, if this support breaks, then I'm not expecting any halt at 482. I'm directly expecting 376 to 405. Okay, so if from the OI data perspective, if I can tell you guys, so ek to 15,700 is the major support, then 15,500, and then directly 15,300 from a OI perspective. Obviously ये जो स्पीड ब्रेकर्स आएंगे बीच बीच में, so you have to keep your eye there, क्योंकि रिवर्स कहीं से भी हो सकता है. On the upside also, on the downside also, कोई इंपॉर्टेंट लेवल से ये रिवर्स हो सकता है मार्केट. ओके, सो डोंट गेट बायस्ड. ऑन द अपसाइड वी हैव 15,920 का लेवल. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज if we have a gap up tomorrow, okay, we may, if we open somewhere around, you know, in the flip or somewhere here, we may travel cross 15,920. ध्यान से सुनना ये बात. We may cross 15,920 and then fail this breakout and then crash. Okay, this is my gut feeling. Levels मैंने आपको दे दिए हैं. Quickly बैंक निफ्टी का भी लेवल्स देखते हैं. Now बैंक निफ्टी you see टिपिकल रेंज में रहा है. वन डे इधर थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग एक मूव दिया. दिस इज कंप्लीट रेंज, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट रेंज. बैंक निफ्टी हैज बीन टोटली इन अ रेंज. ओके, सो बैंक निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट आ सकता है. इफ आई टॉक अबाउट द फ्लिप, 33,358 to 33,441. Support is days low 33,216. First resistance is 33,561, followed by 33,561 to 33,594, followed by 33,723 and 33,802 to 33,839. Now, what I'm expecting in Bank Nifty is, okay, and supports are 32,955 and 32,750 to 786. Right now, if we break this level of 33,216, now you can see here we don't have much, only we have one swing point here. ठीक है, ये एक बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया था, तो इधर एक कोई बेस नहीं है, तो डायरेक्टली वी कैन लैंड इन दिस जोन. गॉट इट गाइस? नाउ बैंक निफ्टी में यू कैन सी वी हैव अ लॉट ऑफ गैप्स. ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम गैप अप ओपन हुए बैंक निफ्टी में, हम इधर तक जाएंगे, ये गैप्स फिल करेंगे ये जोन में, तो बेसिकली
जैसे निफ्टी में मैंने 15,920 का बोला था फेक ब्रेकआउट, इधर एक फेक ब्रेकआउट आ सकता है एंड देन द मार्केट कैन क्रैश। तो इसका गैप फिलिंग का पर्पस भी हो जाएगा। एट द सेम टाइम निफ्टी जो हमारा है, निफ्टी will give a fake breakout of this level and then fall down. So we have three scenarios. एक तो हम गैप अप ओपन होता है, ठीक है, कोई बड़ा गैप अप ओपन हुआ, डायरेक्टली इधर गई, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उसके लिए वी हैव टू यूज वी वैप। अगर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन आता है, गैप अप आता है और प्राइस वी वैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो वो गैप सस्टेन होगा, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट्स अगर प्राइस वी वैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो दैट गैप अप विल सस्टेन। Similarly, if it's a gap down and the price is going to sustain below the VWAP for 15 minutes, then that gap down will sustain. But if we have a gap up and the price is moving below the VWAP, then you can clearly see that this is same scenario happened here today. We opened gap down, price did not sustain below the VWAP, and then we moved up. Okay, where my VWAP लगाऊं, so you can see here, right in the second 15-minute candle, price had moved above VWAP. So then you can understand कि ये प्राइस इधर से मूव डाउन नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू मूव ऑन द हायर साइड। ओके, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो, आरएसआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो आरएसआई वाज आल्सो एन ओवरसोल्ड टेरिटरी एंड दिस वाज अ गुड सपोर्ट एरिया। सो इफ वी ओपन गैप अप, we have to see VWAP. If we open flat, okay, then we have to see the direction. If we are opening flat and we are going up, ride the trend till the important resistance zones, ठीक है। चार्ट कितना भी टेम्प्ट करे, प्लीज लेवल्स को सेफ्टी के तरह लेते हुए चलना, लेवल्स के साथ ट्रेड करना। कोई भी कितना भी चार्ट ट्रेंडिंग दिखने दो, कोई भी रेजिस्टेंस पे आके बाय मत करना। ओके, रेजिस्टेंस पे बाय नहीं होता, सिमिलरली सपोर्ट पे सेल नहीं होता। सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो, यू विल बी गुड टू गो। टुमारोज एक्सपायरी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाकी we'll be on touch in Telegram as usual. Please like, share, and subscribe to the channel so that we can come out with more such videos. If you've not joined our free Telegram group, link will be in the description. You can, of course, come and join our free Telegram group. Also, we have a premium group which you can join. Cheers, guys. Take care. Good night.